नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और आज 16 नवंबर 2022 सुबह का समय है भारतवर्ष में। आज हमारे यहाँ जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ पहली बर्फ़ गिरी है। बहुत सुंदर लग रहा था और ये शीतकालीन की पहली बर्फ़ है, लेकिन बाज़ारों में काफ़ी अच्छी गर्मी है। इसके बाद की बात हम चार्ट को देखकर बाज़ारों का मूल्यांकन करेंगे और मैंने सोचा आप चेहरा देख लीजिए, बहुत दिन हो गए, तो चार्ट देखते हैं। यह निफ्टी का डेली चार्ट है। ये कैंडल्स एक एक दिन के हैं और ये ज़ीरो लैग मूविंग एवरेज है। ये एवरेज ऊपर चल रहा है, इसका मतलब ट्रेंड अप है। अब यहाँ जाकर ये जो अंतिम चरण है, यहाँ पर आप देखिए एक दोजी बनी, दूसरी बनी। ये लगभग जो कल का प्राइस एक्शन था, दोजी तो नहीं था पर उसके काफ़ी आसपास था। तो अब जाकर यहाँ पर ये एक संभावना बन रही है कि शायद हम एक करेक्शन में प्रवेश कर सकते हैं। ये सब शायद है। तेज़ी के बाज़ार में बहुत जल्दी मंदी में आना सही बात नहीं है, पर ये हो सकता है। इसलिए इस समय विचार ये है कि हम टाइट स्टॉप्स रखें। टाइट स्टॉप का मतलब होता है या तो आज पिछले दिन के लो के नीचे रखें, यानी 18,282 के नीचे, या फिर कल की क्लोजिंग प्राइस थी 14,403, उसके नीचे रखें, ये जो कि बहुत अधिक टाइट हो जाएगा। या फिर सुबह 1 घंटा का जो प्राइस एक्शन होता है उस लो के नीचे अपने खरीदार का स्टॉप रखें। पर अब हम टाइट स्टॉप रखें। यदि हमको प्रवेश करना पड़े और ऊंचे दामों में प्रवेश करना पड़े दोबारा, तो कोई हर्ज नहीं है, पर कम से कम प्रोटेक्शन पहले रहना चाहिए। तो अब रुख ये बन रहा है कि बाज़ार में हो सकता है कोई हल्का साइडवेज कंसोलिडेशन डिप आ जाए। इसलिए हम तेज़ी या ख़रीद के तो चलें, पर स्टॉप्स को थोड़ा टाइट कर लें। अगर निकल गए तो कोई हर्ज नहीं है, फिर अंदर फिर प्रवेश करेंगे। Good morning. Today is 16th November 2022, Wednesday, and where I am now staying for the next few weeks, I think 3 more weeks, is a very pleasant area. We just had the first snowfall of the season, so for me it was a beautiful experience watching the snow and seeing clean roads, beautiful snow on the grass, but everything else going normally. While the weather here has become cold because of the winter, the markets are pretty hot now. So the next segment of this discussion will take place using charts. I thought I'll just show you my face. It's been some time now, and I hope everything is well with you also. This is the price bars for the Nifty. The candles are daily bars. We can see how this is a zero lag moving average. We can see how the zero lag moving average has tracked the trend more or less reasonably well. Now at the fag end of this trend, we can see a doji, a second doji. Yesterday's price action, while not a doji, was almost like a doji. A small dip in the zero lag, which went up no doubt, but a dip still. So this group of price actions that we can see here and the indicator action tell us that maybe the market may be ready for some kind of a dip or consolidation. It's a very big maybe. There is no sign as such as yet, except for these little 6 signs, which may or may not be valid. But as traders, we must be cautious and careful. Therefore, I would suggest tightening your stops on the long side. This is not a sign to exit. It is not a sign to go short. Far from it. You never go short in a bull market. It's only a sign that maybe we want to exit if there is a possibility of a correction or a consolidation, and we must exit only on an appropriate stop. The stop can be the low of yesterday, which is about 18,282. It could be the close of yesterday, which would be a very tight stop. It could be the low of the first hour of trading. It could be a parabolic SAR. It could be another moving average, anything that you like. But have a stop predetermined and then stay long. Thank you for watching this video. Jai Hind.